Kiddos, and welcome back to Fun Drawings with Tanu Auntie. And today I'm going to do a canvas, but I'm going to do baka and I'm going to teach you all how to do a canvas. Canvas is simple. If you don't have a canvas, you can use a paper and you can do the same painting. There are simple colors which I'll be using, so no much no kach. Okay, so the colors which we are using right now is my brown. You can see the sketch. I've just make a Ganpati Bappa with Jaffi Maro, a modak. Okay, and he's sitting on a rock. That's it what I have made. Now I'm using my orange, my brown and my white colors to make his entire skin. So we'll do it stepwise. So if you can see the skin, first we'll start with the ear. I've taken a 0 number brush, children. I've not taken a big brush because it is a Chimukula painting and we cannot take a chance with big ones. Iski bhi shendi aa gayi hai. It's not that good, but still. See, this is the ear shape. And yes, keep this vati of your water along with you. So in case your color is dry, you can use this. And you also have to keep a rough brush, so you have to keep on wiping your brush like that. I just hope I have not forgotten to tell you all anything. Okay, so my browns, my oranges. Okay, so this is my orange which I have used. Brown thoda sa border pe kiya, फिर orange किया. It is similar to our oil pastels. You just have to do the guli technique. Even here the guli technique works. See, and we have finished with the ear. This can be done with your oil pastels also, and your poster colors also, children. So same thing, brown, orange. Okay, so children, if you all want to make the same drawing on a paper with oil pastels, use the same colors, use the same guli technique like how I am using. Similarly, you all have to use it with oil pastels or your poster colors. Okay, so there is nothing to worry as such. So अभी फ़िलहाल हम लोग ये 3 कलर्स से ही कर रहे हैं. Now what am I doing is, see, I have a little brown here, so I'm just pulling it out like that and like that to make the lines. Okay, इधर हमारा brown शायद सूख गया है, तो I'll just take a little brown and just do a little lines. You can do the same lines with orange also if you wish, but I feel it should be yellow, so I'm doing it yellow. Okay, so my whites, my oranges and my browns. I'll stop the video sometimes in between when I have to change the color, so that you know it is not very much elongated. Now I've taken my brown. अभी इधर तो तुमको दिख रहा है, इधर I have used my hair here. So what I do is I just take this brown at the border. Can you see this? I've just taken. Take little water because we are using a 0 number brush, so you have to take water, but you don't have to take a lot of water. Okay, don't take a lot of water. अभी ये जो चेहरे का हमारा border है, ये border बना रही हूँ मैं. I've just made the border. Can you see? Now the sundu part. So this is the sundu part. This is the titu. This is the sundu. ऐसा, ठीक है. अब ये sundu part के इधर ऐसा इधर मोदक है. This part has to be black, which we are going to do later. Now you just concentrate on the face. How am I doing the face? Now after doing this, what we are going to take is a little bit of orange. See, I've taken orange. Now concentrate only on the matha part. Okay, and you just have to do guli. Now if you are using oil pastels, children, what you have to do is guli with your normal orange. You just have to mix the colors. The entire technique is just mixing colors. Now I've taken white in my brush. So you know what, now I have decided, I don't know what I am going to follow, but yes, I am going to teach your canvas. The same technique applies to oil pastel, and I am going to do bala so that you all understand the technique. See, अब ये सिर्फ माथा किया है मैंने. अभी I am taking the white color and I am extending my matha ikroon. If there is a little less colors, you can use orange at the borders. Okay, so that the color flows well. Now you have to do guli with orange. Wherever we feel there has to be a little more shine, we can put a little more white. So
It's a simple way to do. I'm doing this with a 0 number brush because it is a Chimukala painting. Okay, so I have used my oranges and I have done the shading. Now I know this shall be the shiny part. I'm just showing you here. इसको हम लोग शाइनी कर देंगे बाद में, थोड़ा सा और ऐसा कलर डाल के मर्ज करके. Keep on cleaning your brush like that and like that before you all go to the next step. Every time you all go to the next step, children, you all should know that you all are supposed to clean your brush well. If you don't clean your brush well, then I am not responsible if your painting goes wrong. So क्योंकि हमारे ब्रश में ब्राउन भी है, हमारे ब्रश में ऑरेंज भी है और हमारे ब्रश में वाइट भी है. वाइट का तो कुछ ऐसा टेंशन वाला काम नहीं होता, बट स्टिल सी आई हैव जस्ट मेड द आईब्रोज. कैन यू सी दिस? नाउ आई एम यूजिंग अ लिटिल ब्राउन एज अ ब्लश ऑन, ऑरेंज एज अ ब्लश ऑन हियर. Okay, still I'm using a little orange this side for as a blush on. Okay, now I just clean my brush, take a little bit of white. Now I'll just take this round. अच्छा, इधर हमको थोड़ा सा white ऊपर डालना, so I've left a little bit of जगह. See, I've left a little bit of जगह here because we are supposed to do a little bit of white this side. So we have to keep on playing with the colors, children. Playing with the colors is really important. So now again I'm taking white. See, this is the shiny part, correct? Yes. Now this is the shiny part for the eye. Now you all can see all fika this because we haven't done the eyes yet. Okay, so I'm taking a little bit of white again, putting a little blush on here. It is exactly how we do the makeups. You all must have been watching makeup reels, you know, इतनी सारी reels आती है, वो makeup की reels आती रहती. कितनी reels आती है, बाप रे. सुक कितना लेयर डालते हैं वो लोग. मैं तो ऐसा लगता है वो लोग पेंट कर रहे हैं, जबकि हम लोग पेंट करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है वो लोग पेंट कर रहे हैं. सो यू हैव अंडरस्टूड दिस मच पार्ट. येस, आई नो यू ऑल हैव अंडरस्टूड. नाउ वी आर टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ ब्राउन, चिल्ड्रन. और ये जो ट्रायंगुलर पार्ट था इसमें मैंने ब्राउन डाल दिया. अच्छा, ये दांत का पार्ट है, सो आई एम जस्ट मेकिंग द बॉर्डर ऑफ द दांत. कैन यू सी दिस टीथ हियर नाउ? येस, यू कैन सी द टीथ. इधर अर्ध दांत है, सो इट्स ओके, लेट इट बी लाइक दैट. Now we'll do this part. So this is the earring part. Okay, see, this is the earring what our Ganesha is wearing. And okay, इधर earring शायद छुप जाएगा ना, because इधर मोदक आ जाएगा. No problem. Now concentrate only on the hand part. Now this is the what जो उसने हाथ में पहना हुआ है उसके पूरा बॉर्डर नहीं करते, नीचे का पूरा बॉर्डर कर देते और ऊपर का कम करते. अभी इधर से ये मोदक ऐसा करके ऐसा आएगा. येस, आई थिंक नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा आएगा बिकॉज द मोदक इज कमिंग आउट फ्रॉम हियर. सो दिस पार्ट इज गोइंग टू बी टोटली ब्राउन एंड येस वी आर गोइंग टू पुट अ लिटिल बॉर्डर ऑफ ब्लैक टू लेटर ऑन. ओके, सो दिस इज द पार्ट, this is the modak part. So this is the hand. I'll just draw the hand again with the paint, brown paint. So this is the thumb part. Okay, now मेरी उंगलियां मेरे को ऐसे लग रहा है बहुत चंगी नहीं बनी है. तो what I'll do is I'll just see. I actually wanted to fold I wanted to fold the fingers, but then it did not happen that well, so I am omitting that and I am just giving it a clear open look. Now this is his hand and this is his pito. पीटो मतलब पीठ, ठीक है. फिर इधर से पैर है. फिलहाल हम लोग इतना करते हैं. इधर लंगोट है, तो तुमको समझ गया. इतना हमने ब्राउन किया. Wash your brush, clean it with a cloth. You can use orange. Now one by one. First what we'll do is we'll do this part of the hand. So I've put a little orange here. And I've put a little bit of orange here. It has to be a little darker this side. So I've put a little bit of orange, and yes, I'm going to put a little bit of brown too.
तो तुमको समझ में आया ना? अभी ये ब्राउन ऑरेंज की ही शेड ही हमको ऑयल पेस्टल हो गया, पोस्टर कलर हो गया, जो भी हो गया, एक्सक्यूज मी, तो तुमको उससे सिर्फ शेडिंग ही करनी है. सो यू नो इट इज़ अ 3 in 2 in 3 in जो भी 4 in काम है जो आई एम डूइंग. That means I'm teaching you a drawing. Abhi drawing and I'm teaching you all how to do it with poster colors, and I'm teaching you all how to do it with acrylic. Acrylic is the most difficult way to do the drawing painting. So and now if you all are easy with if you all are easy with oil pastels, you all will be surely be able to do this drawing very nicely, jhakkasly. So I'm not that much tensed up for this part has to be a little dark. So इधर वो गंदे वाला ब्राउन तुम लोग ऑयल पेस्टल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना. अभी ये पार्ट है, ये पार्ट हमारा डार्क पार्ट है बिकॉज इट इज़ इनसाइड, यू नो इट इज़ इनसाइड इन द शैडो. सो व्हाट आई विल डू इज आई एम जस्ट पुटिंग अ बॉर्डर ऑफ ब्राउन. दिस इज द मोदक, you know, which I have made. Slowly we will do it. Just a border of brown. Now I've taken orange. Now this is going to be the darkest part because it's inside. This is the stomach part, you know. इसका पेटू है इधर, पर वो दिखेगा नहीं क्योंकि हम लोगों ने ऐसे करा. अभी ये हाथ का पार्ट लेते हैं हम. We'll take a little bit of water with us. Okay. Now see, इधर हम लोग ने शैडो किया है, उसके इधर मैंने ऑरेंज किया, करेक्ट. अभी इधर थोड़ा सा ऑरेंज. सी आई हैव नॉट रीच्ड द डाउन पार्ट. आई हैव डन अ लिटिल ऑरेंज हियर. आई हैव डन अ लिटिल ऑरेंज हियर. दिस विल बी द शैडो पार्ट and see where the oranges will go. The oranges will go on one side of the hand. Okay, now this brown part has to be redone again. So फिलहाल हम लोग इतना करते हैं. Now we'll take a whites and do the gully part. If it is with oil pastel, use your white to do the gully here. And in case it is your poster colors, then it is exactly similar to what we are doing it in this. So अभी हम लोग इधर से थोड़ा सा white लिया. अभी करेंगे गुली 2 मिनट. पहले हम लोग सब जगह कलर्स डाल देते हैं because my brush is having ample amount of color. Now we just have to smudge it. Okay, now you all don't have to wait. अगर smudging करने का है तो एकदम ठहर के डाला, फिर थोड़ी देर रुक के smudging किया. ऑयल पेस्टल में रुक के किया चलेगा, but when you are doing it with paints, you cannot wait because the colors will dry. So you have to be fast enough to do it. Okay. And yes, I just wanted to mention, if children want to participate, there are many phone calls which I am getting. Okay, we want to participate but we don't want to come to Mumbai. So there is no problem at all. If you all want to participate, send a chip of what you all have made with trash, and you can walk the ramp in your nearby house या किधर भी walk the ramp and send the chip. We'll play it for our judges and then it will happen. कभी चिंता नहीं करने का. तुम लोग इतना चिंता करते हो ना कि मेरे को ही कई बार घबराहट हो जाती है. तुम लोग बहुत चिंता करते हो. अगर तुम लोग को नहीं आया जाता, नो प्रॉब्लम यार. नाउ अ डेज वर्चुअल दुनिया, तुम लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. यू ऑल स्टिल वांट टू पार्टिसिपेट, जस्ट गिव मी अ कॉल और यू कैन गिव अ कॉल on my husband's mobile and he will direct you on how you just have to send a 2 second or not 2 second, a 1 minute chip of your walk with the trash on treasure, and then it will happen. So this is the other hand. See, I'm just using these 3 colors. I'm just marking the hand first with my browns. So look how simple it is, isn't it? हम लोग ऐसा घबराते हो, लॉर्ड एक्रेलिक नहीं, हमारा बच्चा अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है, हम लोग के बच्चे को अभी एक्रेलिक नहीं सीखने का. ऐसा कुछ नहीं होता है. द ओनली थिंग इज़ दैट यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन यूजिंग द ब्रश. नाउ द ब्रश और इसका क्या डिफरेंस होता है? द ब्रश हैज़ टू बी यूज्ड अ लिटिल वाकड़ा एंड इट हैज़ टू, योर हैंड हैज़ टू बी इन अ हेलीकॉप्टर मोड. बट फॉर कलरिंग, even for coloring, your hand has to be, yes, in a helicopter mode. But coloring is a little simpler than this, but then this is not that difficult either. So never ghabrao, just do it. Once you start doing it, see, you all will never learn if you all don't do it.
So to learn you have to do it. करेक्ट. इसलिए पता है वो एक सेंट आती है ना, डू इट, उसका उत्पादन हुआ था. जस्ट डू इट, ऐसे एक सेंट आती थी. पहले मैं लगाती थी, अभी मैं नहीं लगाती, अभी मैं कुछ और लगाती हूँ. चॉइसेस चेंज, चॉइसेस चेंज, चॉइसेस चेंज. मेरे को ऐसा लग रहा है इधर मेरे को थोड़ा सा वाइट करना है, तो मैं इधर थोड़ा सा वाइट कर देती हूँ और इसको ऐसे ऐसे करके फैला देती हूँ. ठीक है. इधर का भी थोड़ा सा रायता फैल गया रायता फैल गया. Okay, so this is the tummy, this is one hand, this is the other hand, this is the pitu, this is the face. Now we have to, okay, this will be the langot and this will be one leg and this will be the other leg. So let's start. This is the langot part. This is the langot part. You all understand now what is the meaning of langot? Even you all must have worn here when you all were small. So we are making a chotu sa Ganpati Bappa. So even he is small Baba. He is wearing a langot. कि रायता फैल गया रायता फैल गया, हंगामा हो गया. मेरे को बहुत मज़ा आती है कलरिंग पेंटिंग करते हुए, और मुझे उससे ज़्यादा मज़ा आती है किसी को सिखाने के लिए. अगर तुम लोग सीख गए हो और तुम लोगों के अंदर काबिलियत है किसी को सिखाने की, तो प्लीज़ गो अहेड एंड टीच समवन विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम योर टीचिंग्स चिल्ड्रन. See, I've done the entire border first with brown. Now I'm using my orange. Now I'll do stepwise. Now we'll do this part. So this part has to be dark. You should know which parts have to be dark. Abhi here I'm going to put orange here. Orange is a little suka, so I'll just put a little bit of water. So see, I have just left one little line of white. Okay, we'll complete one leg by one. Because you know the colors dry fast. We cannot just, अभी इधर का पार्ट है, इसको हमको थोड़ा सा डार्कनेस में ही करना है बिकॉज इट इज़ द पिछवाड़ा पार्ट. The only thing is that I will send you all the drawing. It's not taught in steps. That's the only thing which I am not doing abhi. But rest पेंटिंग तो हो ही जाती है यार. So I'm just doing my whites now. First I'm filling the place and then I'm going to merge it. Now you're supposed to merge it. It's the same guli technique, children. I know many are scared and nowadays you all are not posting because I am doing acrylic. But then please raise your standards, children. It is necessary. हमेशा ABCD थोड़ी ना आएगा एग्ज़ाम में. थोड़ा सा तो हम लोग को ऊपर उठना है ना उससे. कैसे ऐसे ABCD पढ़ने का नहीं ना. That is why I am raising your standards, children. Please raise your standards. Please try to do a little more difficult drawings than what you all have been doing till now. It is essential. Now this is my browns. You all are in a comfort zone doing oil pastels जो बाहर नहीं जाता है, ब्रश उठाना नहीं आता है. पर जब तक ब्रश उठाओगे नहीं तो कैसे पेंटिंग सीखोगे, करेक्ट? So I know there are many of my students who do wonder art with oil pastel. Nihar does, Sangeeta does, Sangeeta Sen तो मम्मी है, Ayushi Sen, they are still doing better one. Adriti Sen Gupta. भाग नहीं जाने का कभी भी डर के. गब्बर सिंह बोलकर गया है, जो डर गया वो मर गया. He has started doing very nice canvas paintings. एक दो ख़राब होएगी बेटा, उसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग डर के मर के बैठ जाओ. ख़राब होती है, होने दो, नो प्रॉब्लम. जब हम लोग को, मैं पता है, एज अ मदर आई एम टेलिंग यू, एज अ मदर आई यूज़ टू थिंक, भैलट मेरे को मेरी बेटी को ए लिखाने को भी कैसा होएगा. विल शी बी एबल टू राइट ए? I used to wonder, but she did it na. So that is the way it really happens.
Did you all think that you all will be able to read and write? Ask your mummies. Your mummies must be in that same fright, which I was once upon a time. Will my daughter write A? Then slowly, will my daughter be able to read? That is what you call a scary thing for all mothers, all mothers. कि हाईलाइट हमारा बच्चा कर तो पाएगा ना, पर वो कर लेते हैं ना. Similarly, I'm telling you all, come out of your comfort zone and do. See, we have done the body. Now I'll just remove my black. I'll take a break. I'll remove my black so that we can color these other parts. Okay, I'm back with my black and my deep yellow. First I was thinking हम लोग मोदक को येलो बनाते हैं, लेकिन अभी मेरे मन में विचार है इसकी लंगोट को येलो बनाएंगे, इसकी ज्वेलरी को येलो बनाएंगे, तो हम लोग अपने मोदक को येलो नहीं बना सकते. Okay, so you just dip your brush very clean and tidy. Take a little bit of black. See, so small little black. And now the most difficult part. I get very scared when I do this. Eyes, because I don't want my eyes to get bad. This is the beauty of the drawing, I feel, is through the eye. So I always feel that the eyes have to be the best. पूरे ड्राइंग में कुछ अच्छा हो या नहीं हो, आईज तो अच्छी होनी चाहिए. ऐसा मेरा मानना है, सबका मानना नहीं होता है. चिल्ड्रन, यू ऑल गेट स्कैर्ड. तो उससे ज़्यादा तो मेरे को डर लगता है, पता है, ड्राइंग बनाते वक्त. मैं भी बहुत डर के बनाती है, पता नहीं तुमको. आई गेट स्कैर्ड रियली. I really get very scared whenever I do my drawing, because the scare is not इधर से फुल नहीं करना है, थोड़ा सा करना है, because the water line has to be seen. Now if we want, we can put a little bit of eyelashes. Yes. Okay. Now we'll make the चंदा मामा. इधर ना अभी मैं ब्लैक पार्ट्स जो करने हैं वो कर देती हूँ. इधर एक टिक्का बना देती हूँ, क्योंकि ये एक टिक्का का मेरे को पता चल जाएगा. इधर सेटिंग है. अभी इधर हम लोगों का ऐसे थोड़ा सा डार्कनेस है, इधर थोड़ा सा डार्कनेस है. Wherever you want the black color to be visible, please put the white color here. This has to be absolutely dark, so I'm doing it. Okay, this is the modak. This has to be dark. This part has to be dark. This is the shadow area. This part has to be dark. This part has to be dark. This part has to be dark. Not everything has to be dark, but yes, there are certain things which have to be dark. तो वो कर लेते हैं, बाद में हम लोग बाकी का भी कर लेंगे. मैं पता है इधर की चूड़ी बनाना भूल गई. अभी मैं क्या करूँ, मैं बना ही देती हूँ, क्योंकि ऐसे ना बिना चूड़ी के बंदा चंगा नहीं दिखता है. Okay, so I've done this. Now where the shadow goes, it has to go like that. Up. I think so. This is a quite okay thing. Okay, I'm just putting a little black here. Yes, फिलहाल ब्लैक का काम नहीं, बाल भी तो बनाने हैं. बाल बना ही देते हैं, क्योंकि ब्लैक खोला है तो फिर काम ख़त्म ही करते हैं. एंड वी स्टिल हैव टू वेट फॉर द ज्वेलरी. मतलब, सो आई हैव टेकन अ लिटिल झाड़िया ब्रश टू डू द ब्लैक, बिकॉज अदरवाइज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम विद द 0 नंबर ब्रश. एंड आई टेल यू व्हाट इज़ टू बी डन. पहले तो अपना पूरा ऐसे करके भर दो. पेंट में ये एडवांटेज है कि तुम लोग पहले ब्लैक कर सकते हो, नहीं तो मैं तुम लोगों को कितना ब्लैक का डराती हूँ ना. पेंट का ये एक एडवांटेज है ना. यू ऑल कैन डू योर ब्लैक्स बिफोर हैंड. नाउ आई हैव टेकन अगेन माई 0 नंबर ब्रश, जो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे थोड़े थोड़े बाल ऐसा अंदर लेकर आने.
slowly you'll do it, it will happen, है ना। जैसे ऐसे कंघी की हुई है इसने, और इधर ऐसा जूड़ा बना दे। चलो इधर हम उसके जूड़ा बना देते हैं, ये वो ऐसा हाई जूड़ा। So this is the part. So our Ganpati is almost done. अभी बैकग्राउंड का झटापट्टी होता है ना। आई एम जस्ट क्लीनिंग माई ब्रश क्लीन so that I can use my yellow, and after you doing the yellow we have to do a little karigiri with brown. So this is just filling deep yellow, okay, this is deep yellow color. चल oh मोदक I am not supposed to do मोदक, I am supposed to do white. वही तो मैं गड़बड़ कर दूँगी, क्योंकि है ना यार इसके ये ऑर्नामेंट्स हम लोग येलो करेंगे ना तो मोदक भी येलो येलो अजीब सा लगेगा, और लंगोट भी तो करनी है हमने येलो। सो इधर येलो कर दिया। नाउ वी हैव टू वेट फॉर द येलोज टू ड्राई so that we can do our browns. Till then we'll do the langot. Okay, so this is the langot. Okay, now the langot is done. Now what I will do is I'll quickly make the lower part, or should I do the modak? Okay, I'll give one coat of white to the modak till I don't think so you all will be able to see the modak very clearly unless and until we don't do the background, but still I am able to see it. If you all are able to see it, fine, otherwise you all will realize kaisa karna hai. ए इधर येलो भूल गई मैं, करती हूँ अभी करती हूँ। सो मैंने मोदक का एक स्ट्रोक दे दिया है, अभी इसके अंदर मेरे को येलो भरना है, भर दिया, ठीक है, इतना पार्ट हो गया। अभी इधर के पार्ट पे थोड़ा सा शेडो आएगा, सो आई एम जस्ट पुटिंग दिस हियर। नाउ वी हैव टू डू अ लिटिल कारीगिरी इन ऑल द येलोज, टिल देन वी विल डू द स्टोन। ये वाला ब्रश नहीं लेती, आई एम जस्ट चेंजिंग माई ब्रश चिल्ड्रन। ओके, this is my 1 number brush, round brush, which is also a little spoiled, but then Salil, see what am I doing is I'm just putting my blacks. Can you see this? Why I'm putting blacks here is because the shadow of Ganpati is falling on this stone. Otherwise this side we have to do it a little white. Okay, अभी ये कर दिया। अभी ये ब्रश को अच्छे से दो। अभी हम लोग क्या करेंगे, ब्राउन लेंगे, और काफ़ी सारा ब्राउन लेंगे ब्रश पे, और कैसे भी किधर भी कुछ भी कर देंगे, गंजा 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 बू गंजा गंजा गंजा। अभी पहले मैं है ना इधर ब्राउन और ब्लैक का मिलाप नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल, बट येस वी आर सपोज टू डू इट। बट फर्स्ट लेट अस मेक नॉट क्लियरली अच्छे से। ओके, उसके बाद अभी मैं क्या कर रही हूँ, आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ वाटर इन माई ब्रश एंड आई एम जस्ट मिक्सिंग द ब्राउन्स एंड द ब्लैक्स ओनली इधर तक, ठीक है, थोड़ा नीचे भी ले आए तो चलेगा। Now I am using my white color children and I am just putting a big nice मोटा layer here. Now I am going to mix it, but फ़िलहाल वो मिक्सिंग थोड़ा कलर चेंज हो ही गया ब्रश में बिकॉज ब्राउन आ गया है। Now what you have supposed to do is just take your finger and just keep on putting the colors wherever you wish. This is the way I make my patthar, okay? It is not the right way, but this is the jungly way. And I would always tell everybody to just do it the jungly way, because जितने जंगली वे में हम लोग बनाते हैं ना पत्थर, उतना सुंदर पत्थर बनता है। इट इज़ जस्ट अ पत्थर ना यार, वाई यू आर वरिंग। हो गया, टेंशन नको का घेऊ। अभी थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा वाइट लिया, इधर थोड़ा सा वाइट डाल दिया और हो गया।
पत्थर बनाने तुम लोगों को मैंने बहुत बार सिखाया है ऑयल पेस्टल्स है, तो टेंशन नको का घेऊ. Now again I'm going to take my 0 number brush, okay, and I'm going to take a little bit of brown which is there on my dabda, and just I'm just doing gucci pucci, nothing. Gucci pucci is gucci pucci goo, मतलब किधर भी कुछ भी करने का ऐसा, मतलब किसी को डिज़ाइन पता ही नहीं चलेगा. हम लोग इतने महान डिज़ाइनर हैं कि हमको किसी को भी डिज़ाइन बताने का नहीं, बस हो जाना चाहिए. कुछ तो डिज़ाइन है, ऐसा ही मन में आना चाहिए, पर डिज़ाइन क्या है ये किसी को पता ना चले. Now what we are going to do is we are going to take a little bit of red for this tilak part and this little dashes on the sundwa. And I'm going to take a little bit of black and white color for the modak. Wait, I'll just show you the sundwa part first. Keep your brush dry and nice, clean. Now we are going to make the U bindi, okay? You can make the Om bindi also, it's your wish, completely your wish. So हमने U बिंदी बना दी. अच्छा, अब यू बिंदी बनाने के बाद ये जो मैंने किया है ना ब्लैक, उधर मैं रेड कर रही हूँ. मैंने ब्लैक इसलिए किया था सो दैट आई डोंट फॉरगेट द सेंटर. आई गेट वेरी स्केर्ड, आई एम अ वेरी डरपोक बंदा. अभी देखो हम लोग को क्या करने का, ऐसे 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 ऐसे. लेट द कलर फेड, डोंट डिप योर ब्रश अगेन इन रेड कलर. ओके, डन. Now clean your brush, clean your brush. Okay, now you're going to take white and पहले तो इधर फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन बना देते हैं हम. ऐसा 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 फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन, हमने फूल बना दिया. अभी हमको वाइट लेने का है. अभी वापस से डिप नहीं करने का. यू डोंट हैव टू रिटर्न डिप योर ब्रश अगेन and you just have to make a white line. जितना दिख रही है दिखने दो, नहीं दिख रही मत दिखने दो, बस पर हमको इतना ही करने का. अभी अगेन आई एम टेकिंग लाइट बिकॉज हमने दांतों को तो कलर किया ही नहीं. क्या हमने आपने रियलाइज़ किया कि हमने दांत को तो कलर किया ही नहीं. अभी हम टेकिंग लिटिल बिट ऑफ ब्राउन एरिया. अभी हम लोग ब्लैक करके ना, आई एम जस्ट शोइंग यू द मोदक का बॉर्डर. सो दिस इज माई मोदक. कैन यू सी द मोदक? ओके, नाउ आई क्लीन माई ब्रश. सी, आई क्लीन माई ब्रश, आई डिप इट इन ब्लैक, सॉरी वाइट. अभी मैंने क्लीन इतना भी क्लीन नहीं किया कि ब्राउन ब्लैक दिखे ही ना. थोड़ा सा तो गंदा है, पर थोड़ा भी गंदा नहीं है यार. ऐसा कैसे हो गया? कभी ऐसे ज़िंदगी में मेरा ब्रश इतना क्लीन नहीं होता. तो हल्का सा मेरे को ग्रे लेके, हाँ आया ना, थोड़ा सा गंदा सा, हल्का सा, मतलब इट हैज़ टू बी अ ग्रे कलर. एंड यू जस्ट हैव टू मेक लाइन्स. ऑयल पेस्टल चिल्ड्रन कैन डू इट विथ ऑयल पेस्टल्स. अंडरस्टूड? ऐसा मोदक की लाइन्स होती है ना, बस थोड़ी सी बतानी है, ज़्यादा बताने की नहीं है. हो गई. अभी वॉट नाउ, आई जस्ट टेक अ ब्रेक बिकॉज दिस इज़ अ लिटिल वेट. Yes, this is a little wet, but then I need to do something which I forgot. You are supposed to take a little bit of brown color, okay, और eyes के नीचे का पार्ट, निचले पार्ट पे we have to put brown. Okay, this will give a little bit of substance to our eyes, a little brown here. Okay, and later on we are going to put a white dot, so that will happen. But अभी सिर्फ बैकग्राउंड है. बैकग्राउंड के लिए आई एम टेकिंग माई 22 नंबर वाला turquoise color. Okay, so I'll just take my turquoise color and come back to you. Okay children, I hope you all can see this, and I've kept it a little wakda because I had to do it this way, and I have already done my border with my turquoise color children, so that you know it goes a little faster. Nothing to worry because I am very careful with my border, however big I become, but I get very scared when I do this. So I have taken turquoise color and I am zap doing the rest of the part. So I will complete this entire turquoise aisa bhar ke. Okay, and in 2 minutes we are going to color the entire thing. Okay, so let's go.
This is my turquoise color, turquoise. You can take a little bit of white if you all want a little bit of shading. See, this is the way the color looks. Of course you all are able to see because I've already done it here. Okay, but it will give a little bit of chapa. So you have to take a double coat or a single coat or whatever y'all this. Please keep on doing it. See, and now I'm doing it fast because I've done my borders, children. Borders take around 15 minutes to do, so I have skipped that step for y'all. Hush. So see, here my border was supposed to be white. I've just taken a round brush to do it. Y'all can even take a flat brush and keep on doing zup. Okay, please keep doing this. Y'all can use a different blue color shade also if you all wish, but I don't know how it is going to look. Should we try turquoise with a little bit of cerulean blue? How will it look? Let us try. Let us see. Actually, I wanted to give this color. This color looks just... I have my cerulean blue. See, such a big dabda. I'm just trying a little bit of cerulean blue here and just seeing how the turquoise, and do they merge well or they look awful. No, they are not looking that good. So forget it. We are not going to merge this. We're just going to put turquoise, and if I am short of color, I'll just pour a bit here and we'll do it. So keep on doing zup. I think so. I'm wasting your time. What should I do? Should I do the entire coat and I'll come back to you, or you all want to see the way I do it? What you all will see the way I do it. I've actually finished with this color, but I'm going to color this and come back to you. Okay children, I'm through with my turquoise color, and listen children very carefully. This turquoise color is not dry. It is not dry. Now we are going to take a finger and we are going to put zoom. But this does not have to be only zoom. It has to be blended behind. So this is my first stage. Okay, so it has to go light like that. Please use circular movements, and please don't use a brush. Please use your finger, because once you use your finger it really looks pretty. So this is samtela. Okay, this is the first layer. Okay, this is gone dry, so I'll just do this here. Okay, I'll have to do 2, 3. Now here, slowly, you know what will happen, it will start becoming brighter. You know, these are the pichwada ones, the backbenchers. Okay, जो एकदम light हो गए हैं. Okay, these are the last backbenchers. Okay, keep on cleaning your hand. It is necessary. Now you again take 1, 2, 3, 4, 5. इससे ज़्यादा मत करना, फिर वो गंदा हो जाएगा. अभी इसको थोड़ा सा मतलब ब्लू दिखना चाहिए और ब्लू नहीं भी दिखना चाहिए. Understood? It should be a little ujala than what this is. Okay, so just a little ujala than what this is, but it has to be again blue. As this has become almost the same color, so I'm just putting it again, making it a little darker or brighter. It cannot be the same color. So you keep on doing this in many places. You can even overlap it. Okay, please, you can overlap it. And the last one will be the brightest white. So this is the way, you know, these are lights, some lights falling somewhere far away. The blurry lights. We could even have done धुआं, मतलब किसी ने दीप बत्ती जलाया तो धुआं भी कर सकते थे. अच्छा, हम लोग नेक्स्ट वाला कुछ करेंगे ना, उसमें हम लोग धुआं कर देंगे. अभी मेरे को स्ट्राइक नहीं हुआ, अभी मैंने कर डाला. सॉरी, धुआं सोचा था पर मैं भूल के ये करने लग गई. देखा मेरा दिमाग की चैसा है.
just see to that they have to be circular. Okay, whether you can redo it, no issues at all. I think so this is enough. Should we do more? I don't think so we should do more, nor should we use any other color. तो भी मैं भी ठीक की तरह करती ही जाती हूँ ना, तुम लोग भी मेरे को ऐसे ही बोलोगे, पहले बोलती नहीं करने का, फिर खुद ही कर देती है ना, करते जाने का, देखी जाएगी. I think so this much is enough. Many lights, the Norway lights on our गणपति बप्पा. अच्छा नहीं आया, ये वाला भी थोड़ा अच्छा नहीं है, तो इसको थोड़ा सा अच्छा कर देती हूँ बस. I think so it is enough. I am not going to do more. I am not going to do more now, children. Acha. I just have to tell you all one thing. Children who are doing it with oil pastels can take your white and just do this. This will happen with your oil pastels also. This will happen with your poster colors also. So please do make it and post it on canvas and scissors. Bye-bye.